गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू MatSciOdia मु तुम मानकर संबित सार पिले तुम मानक स्वागत करूची आजिर क्लास आजिर क्लास रे आमे माने डिस्कशंस करिया को जाउछंती मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो पिले मु तुम मानकर जो पूर्व क्लास टी रहितिला तो से क्लास रे आमे माने मेल आउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर डिस्कशंस करिथिले जो थरे आमे माने तार डिफरेंट पार्ट्स एवं ता ऊपर आमे माने डिटेल्स पढ़ी एवं तार फंक्शंस उपरे मध्ये आमे माने डिस्कशंस करूथिले। मु आशा करिबि तमे माने आजिर क्लास को प्रथम रु शेष जाय देखिबो एवं किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट आउट करिवो। तो बिना कोनोसी देरी न करी आमे माने स्टार्ट करिबा हमर आजिर ई क्लास टिको। तो ठीक अछि पिले स्टार्ट करिया। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टी कोन आमे काहा को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोली कहबा आ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ता को भली भाबरे तमर माने अफेक्ट करूची प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ए सब जिनस ऊपर मध्ये हम ए पार्ट ऊपर डिस्कशन करिबा। ओके तो पिले प्रथमे हमकु बुझिया पड़ियो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कोन बा मेंस्ट्रुएशन से हमें काहा को कहि परिबा। तो मु प्रथमे इंट्रोडक्शन दोउची। इंट्रोडक्शन तो मेंस्ट्रुएशन कोन पिले मेंस्ट्रुएशन मे बी डिफाइंड एज may be defined as कौन सा पिले defined as the periodic as the periodic बा ताको हम साइक्लिक बोली कहउछनी माने एटा गोटे पीरियड भलिया माने गोटे फेज गला पुनी आ गोटे फेज आस माने तार चारटा फेज अछि हम से विषय रे मध्ये डिस्कशन करिबा। माने गोटे फेज आसिला तापर पुनी आ गोटे फेज आसीबो पुनी तापर गोटे फेज आसीबो एटा गोटे साइकिल माने चारटा फेज होउची तमरे गोटे साइकिल पुनी तमरो सरी जाइथिबो माने स्टार्ट हबो मेंस्ट्रुअल फेज रु सरीबो तमरो हला कोन प्री मेंस्ट्रुअल फेज पाखरे बा पोस्ट ओव्युलेटरी फेज पाखरे पुनी सेटु पुनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनी अगेन आउटर स्टार्ट माने पीरियडिक गोटे परे गोटे एम्प्टी मेंस्ट्रुएशन हेई थाए। तो मेंस्ट्रुएशंस मे बी डिफाइंड एज द पीरियडिक और साइक्लिक discharge of blood mucus on fertilized ovum and a cellular debris could asते from the uterus from the uterus बुझी पाइला माने यूटेरस दिहरु ए सब जिंस कोन हेता पिले ना आसी थाए हैला को टाइम रे at an average interval of 28 days माने 28 दिन परे हैला माने गोटे मेंस्ट्रुएशन साइकिल सइला पुनी 28 दिन लागियो माने गोटे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट करिया पे तमरो 28 दिन लागुची पुनी अगेन आउ थरे पुनी स्टार्ट हबा को पुनी 28 दिन गथुर पुनी आ गोटे मेंस्ट्रुएशन साइकिल तमरो स्टार्ट हो बुझी परछ तो सेति पे आकु पीरियडिक कुआ गला साइक्लिक बोली कुआ गला गोटे परे गोटे एभली जेरा चालू थाए 28 days in the reproductive life of a woman माने जने स्त्री लोकर बा वुमेन्स मानकर बा स्त्री मानकर कोन हेताय जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टे रहिताय बा फीमेल्स मानकर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टे रहिताय से कोन पिले जते हम डिफाइन करिवा मेंस्ट्रुएशंस मे बी डिफाइंड एज द पीरियडिक साइक्लिक डिस्चार्ज माने पीरियडिक आ साइक्लिक गोटे चक्र पीरियडिक माने कोन गोटे गोटे समय गला आ गोटे समय
समयटा तुम टोटाली 28 डेज बुझी पाइल तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस ऑन फर्टिलाइज ओवम एंड सेलुलर डेब्रिज फ्रॉम द यूटेरस यूटेरस भितर थिबा म्यूकस ऑन फर्टिलाइज ओवम ब्लड सेलुलर डेब्रिज ये सब जाक जिनसर कौन होची ना कि डिस्चार्ज हम एवरी 28 डे बुझी पाइल गोटे रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन बुझी पाइल समस्या दैट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छा द पीरियड बिटवीन the period between two successive menstruation is called menstrual cycle बोले जो टाइम टा माने दीटा तमरो ओभम रो गोटे समय रे सपोज डिस्चार्ज हेची गोटे दिन सेठू आउ गोटे दिन डिस्चार्ज होबार जो टाइम टा 28 डेज लागिवो तो ताकू से जो भीतर टाइम इंटरवल जोटा रहले ताकू ही हमें माने मेंस्ट्रुएशन साइकल्स बोली कहउचंती मेंस्ट्रुअल साइकिल बोली ताकू कुआ जाउ menstrual cycle है ना the onset of menstruation are जब 12 to 13 ईयर तुम मैंने बुझी पारुथो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होची केबे ना प्यूबर्टी टाइम 12 रु 13 वर्ष समय रे मेंस्ट्रुएशन आसीबा स्टार्ट हे जाय तो हमें कहउछथि कोन ना मेना बोली कुआ जाय बुझी पाइलो जेतो एटा एंड होची एंड द stoppage of menstruation at the age of 45 to 55 years is called as menopause तक हम कहउछन कोन पले ना मेनोपॉज बोली कुआ जाउची कोन कुआ जाउची ना मेनोपॉज जेते बेले गोटे सपोज गोटे फीमेल टीए जेते बेले जन्म होउची सेइटु 12 वर्ष जाय से शिशु अवस्था रे ही रहउची जेते बेले से किशोर अवस्था को प्रवेश करूची बा 12 वर्ष रे जेते बेले से एडोलेसेंस तार आसुची बा कैशोर अवस्था आसुची तो 12 वर्ष कतरे तार मेनाज बा तमरो मेंस्ट्रुएशन साइकिल टी स्टार्ट हबा को लागुची एवं ए जो पूरा पीरियड ता तमरो 45 टू 55 ईयर पर्यंत एटा कंटिन्यू करिवो एमती हैला जेते बेले एटा बंद हबो ताको हमें मेनोपॉज बोली कहबा एटा तो स्टार्ट होची ताको हमें माने मेनाज बोली कहउचंती बुझी पाइले समस्ते अच्छा menstruation is not seen before puberty माने जो पर्यंत तमे जो पर्यंत फीमेल माने एडोलेसेंस को आसी नांती जेतेबेले पर्यंत सेमान 12 वर्ष 13 वर्ष हेइने ता पूर्वरु मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखा हबन किंतु आजि काली दिन रे हमर जो दैनंदिन दिनचर्या रही तार जो परिवर्तन घटुची एवं ता सहित आमे माने जो सब डिफरेंट टाइप रो केमिकल दिया खाद्य ग्रहण करूचंती बा औषध दिया प्रोसेसिंग वाला खाद्य जो आमे सब ग्रहण करछंती ता प्रभाव रे आजि काली रो दैनंदिन जीवन रे जो आमे माने सठिक समय रे ठीक खाद्य पाई पारु नै हम बॉडी जहाँ भी पाउची सेटा तमरो टॉक्सिक टाइप रो जहाँ कि हम बॉडी रे हार्मोनल इम्बैलेंस करोची एवं बेले बेले 12 रु 13 वर्ष हबा पूर्वरु मध्य केते कांसर देखा जाईची जे बहुत शीघ्र इयरली
puberty आसी जाय थाए बा yearly menstruation cycle आसी जाय थाए बुझी परछ समस्ते is not seen before puberty ये puberty पूर्वरु देखा जाई न थाए नॉर्मल केस रे बट आजिकाली दिन रे एटा कॉमन हे गेलानी puberty पूर्वरु भी आसी जाउची हला कोन ना menstrual cycle आसी जाउची puberty आउ को समय रे ना ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी एंड मेनोपॉज ये हला तमर पिले इंट्रोडक्शन तुम इंट्रोडक्शन इति पॉइंट लिखिबो जदि एबे हम तार साइकिल को जदि हमें माने भाग करिबा ताहले मेंस्ट्रुएशन तुम माने लिखि परिबो the menstrual cycle involve the four phases এটা লং কোশ্চেন্স বুঝি পারছ তো these are given below मु तुम मानको एकादर एटा एक्चुअली कहया गले मु जियोलॉजी रे जहां भी तुम मानकर क्लास करूची लिखि की सेटा तमरो मन डायरेक्ट मु क्वेश्चन वाइज ही तुम मानको पढौची बुझि पारछ तो मु लॉन्ग क्वेश्चंस फास्ट तुम मानको पढै देली तापर किछि तुम मानको 2 मार्क की टाइप रो क्वेश्चंस करैबी तापर 2.5 मार्क टाइप रो क्वेश्चन करैबी एवं किछि तुमको इंपोर्टेंट एमसीक्यू मध्ये कहि देबी माने एमसीक्यू टाइप रो क्वेश्चन होते सेटा सब वन वर्ड आंसर थो कि ताधुर एमसीक्यू आसीबो सेही थ्रू ही एमसीक्यू आसीबार बहुत चांसेस रहउची ताकू कोन करा गला पिले ना चारिटा फेज रे भाग करी दिया गला कोन कोन देखिबा प्रथम आसला कोन मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट आसला मेंस्ट्रुअल फेज पता को तमे माने डिस्ट्रक्टिव फेज बोली भी कहि परिबो कोन कहि परिबो डिस्ट्रक्टिव फेज बोली कहवा जाय थाए तापर आसला कोन बोली पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बाको तमे माने कहि परिबो कोन बोली ना फॉलिकुलर फेज बोली कहि परिबो बा ताको तमे माने कहि परिबो आउ कोन कहि परिबो ना प्रोलिफेरेटिव फेज 3 नंबर हला एरा सब मन रखिबो तमरो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज को फॉलिकुलर फेज प्रोलिफेरेटिव फेज बोली कुआ जाय मन रखिबो मेंस्ट्रुअल फेज को डिस्ट्रक्टिव फेज बोली कुआ जाय मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट सिप्स 3 नंबर आसला कोन केले ओव्यूलेटरी बाको ओव्यूलेशन बोली कुआ जाय अच्छा एबे 4 नंबर का 4 नंबर का कोन कहउछ पिले एटा हला प्री मेंस्ट्रुअल फेज बा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज secretory phase luteal phase लेवल एल 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 एला ले बुझी परत luteal phase मन रखियो एटा को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोली कुआ जाय secretory phase और luteal phase पोस्ट ओव्यूलेटरी एति पय का गला ओव्यूलेशन पर हला secretory phase बहुत सारा सिक्रेशंस घटिताय प्री मेंस्ट्रुअल का गला माने पुनी आउथे मेंस्ट्रुअल फेज रो अपा पूर्व अवस्था ते एटा को कुआ जाउची प्री मेंस्ट्रुअल फेज बोली बुझी पाइला तो एबे आसो फास्ट ऑफ डिस्कशंस हमें करिवा दैट इज कोन menstrual phase तो menstrual phase कौन बिल जानिबा it is a beginning phase first दिन से मन रखा it is a beginning phase
which is marked by the bleeding through vagina, by the rupture endometrium. बुझिपाइल जो endometrium wall टा rupture हबो, it is the beginning phase which is marked by the bleeding, माने एटा bleeding होउची through vagina, जो रक्तस्रावटी घटिबो vagina माध्यम पर देखि काहे ना तार जो endometrium layer टा थाए vagina सेटा rupture हो, तो rupture endometrium and this blood vessel, तो दैट जो blood vessels गुडी को रहितो सेटा rupture हो से टाइम रे. बुझी परछो तम माने तो एटा ही हला कोन पिले ना menstrual phase रो अच्छा तब सेटु कोन हबो पिले ना mucus cellular debris and unfertilized ovum are also released एतरे release होइतांती during this phase. It extends from first to fifth day पर्यंत एटा रही थाए. बुझी परछ तो endometrium हला endometrium and its blood vessels and its blood vessel. अच्छा mucus cellular debris and unfertilized ovum are also released during this. बुझी पहले तो माने एई फेज रे म्यूकस भी रिलीज हो, सेलुलर डेब्रिस एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम मध्य मेंस्ट्रुअल फेज बा फर्स्ट फेज रे कोन होइतै ना रिलीज होइतै. It is extends from first to fifth days. प्रथम रु 5 दिन माने मेंस्ट्रुअल फेज होबारु 5 दिन बोलते ए फेज टा रही हाय. बुझी पहले समझते तो आज पई एतिकी. नेक्स्ट क्लास रे बाकी जो रहिला आर आउ जो फेज गुडी को रहिला आमे से फेज ऊपर डिस्कशंस करबा. म आशा करछि तम मानो क्लास टी बहुत भल लागितो एवं तमे माने एथरे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट आउट करिथिबो. तो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा. से पन्द पई समस्त धन्यवाद. समस्त भले रे रुआ आ समस्त को बेस्ट ऑफ लक तम मानकर एग्जाम और एग्जाम रो प्रिपरेशंस मन जो करू. थैंक यू पिले. थैंक यू सो मच.